Good morning, students. Good morning, sir. How are you? We are fine, and you? Fine, thank you. Today we shall discuss a follow-up lesson. 8th class English follow-up lesson. The name of the follow-up lesson is Tips from the Wise Old Woman. Could understand? Yesterday I told you men. Instead of women, I told you men. Remember, didn't I? So, actually the name of the follow-up lesson is Tips, Suchana Upadesha, from the wise old woman, or mantrana, we can say like this. So, we have discussed some of its paragraphs. Today, we shall begin from the SGP2. SGP2, that is the sense group paragraph number 2. You understand? So, Sibei Maharana, you remember we have discussed the father of Dharmapada. Sibei Sa, Si Sa Sini, you know, Si means Dekhiva, Sa means its past tense Dekhila or Dekhile. Sibei Sa dere alone ekutia, nirjana, jane ekaki. Old woman, who saw whom? Sibei Mahana, Sa a lone woman, jane ekaki budi loku dekhila. Bent with the age, onta podi jaichi. Budi jogu onta podi jaichi. Bent with the age, preparing food. Preparing is prastuti kariba. Food खाद्य प्रस्तुति କରୁଛି. Sibei Mahana was terribly hungry, you know. Yesterday we discussed it. Didn't we? Yes or no? Tell me. Yes. Sibei Mahana lost his way in the forest. He was hungry. He was looking for some help. He was able to find a hut, and he went there and saw an old woman. And that old woman was alone, and she was bent with age, onta podi jaichi, and she was preparing her food in the hut. Could understand? Who was preparing food? The old woman was preparing food. Why was the old woman bent? The old woman is bent because she was old, very old. She was bent of age. He said means who said? Kiye कहला? Who said? किए कहला? Sibei said. Say means कहवा, said means कहला. Sibei कहला. Mausi. In Oriya we call Mausi, in English that is auntie, aunt. I am terribly hungry. Terribly mote bhayankar bhokko hochi. Who said it? Kiye कहला? Sibei told it. To whom? Said it to the old woman. What did Sibei say? I am terribly hungry. Can I get some food? Who asked? Sibei asked. Kichi khadyo pai parivi. Get means paiva. Can means pariva. So can I get some food? Kichi khadyo pai parivi ki? The old woman welcomed. Swagata janela. Welcomed. Swagata janela. Who welcomed whom? The old woman welcomed Sibei. Give him a tattered mat. Tattered means chira. T-A-T-T. Tattered means chira lekeda. Tattered cloth. Generally, the clothes of beggars, bikari manakar pusaka, are torn and tattered. Could
सो गेव हिम ए टेटेड मेट गोटे मसीना देला बसिया को चिरा लेंकेड गोटे मसीना देला हु गेव हुम दी ओल्ड वुमेन गेव gave ए टेटेड मेट टू सिबेई Sibyl. टू सीट बसिया एंड सर्वड परसिला खाद्य परसिला सर्वड हिम हॉट सिंपल राइस राइस माने चाउल पोरीज गोटे खाद्य पदार्थ पोरीज माने खाद्य पदार्थ खीरी हेल्ले भावी नियो यू थिंक इट इज ए खीरी और जाऊ कुडाने से ए स्टिकी आइटम मेड ऑफ राइस इन ए प्लेट रे परसी देला जाऊ मांडिया जाऊ स्टीम कमिंग आउट स्टीम मीन्स बाष्प यू नो तातला जदि बढ़ाई बोले ता भीतर हाउ बाहर ना नहीं हाउ बाहर स्टीम कमिंग आउट ऑफ इट से स्टीम बाहर जाऊरु स्टीम बाहर कुड अंडरस्टैंड और नॉट How about हाउ बाहर व्हाट वाज कमिंग आउट स्टीम वाज कमिंग आउट स्टीम मीन्स बाष्प सिबे डाइविड हिज हैंड सीधा हाथ पुड़ी देला डाइविड मेरे हाथ पुड़ी देला डाइविड हिज हैंड स्ट्रेट मीन सीधा सी ततला जाऊ भीतर सीधा हाथ पुरी देला हु डाइविड सिबे व्हाट हिज हैंड कौन होइतली यू थिंक टेल मी हाथ पोड़ी जाइथियो पुड़ियो कि फुटकाई फोटका जाइतो हाँ सिझी जाइतो पुड़ियो कि निआडा कि पुड़जियो जे इट विल नॉट बर्न व्हाट विल हैपन इट विल बॉयल कुड अंडरस्टैंड सी तातला जाऊ प्लेट आनी रखी देला ये विदाउट गिविंग सेकंड थॉट विदाउट गिविंग सेकंड थॉट आउट ऑफ अटर हंग्री पूरा भोकरू ये कौन कला सीधा हाथुड़ा पूरे देला कौन हेती वाली व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड टेल मी व्हाट वुड हैव हैपेंड व्हाट डू यू थिंक टेल मी कौन हेती वाली तमे भाबुछ हाथटा फटकायला तातिला आई मालो ओ माय गॉड कहला हु सेड Sibyl. Sibyl in the middle of the plate to have a handful of porridge पुलाए जाऊ आनिक खाईदेव काकुड़ते बोली हाथटा सीधा मारदेला कुड अंडरस्टैंड हॉट बाय द हीट से तापरे आघात पाई हु गॉट हॉट Sibyl. सिबे ही स्प्रांग बैग हाथर पुणी हाथरे झांपी देला फेरई देला झांपी फेरई देला काढ़नेला स्प्रांग बैग स्प्रिंग वालिया स्प्रांग हिज हैंड एंड स्टार्टेड ब्लोइंग इट फुंकिला लाइक दिस टू लेसन द हीट से जो गरमर तापटा ह्रास कर लेसन माने लेसन मीन्स भर्व कराई ये न लगे लेसन ह्रास करवा द हीट ताप मात्रटा को ह्रास करने हाथ में फुंकिला सॉक्ड बाय द वे ये जो ये आर ये प्रकार चालीचलन सॉक ही सिबे स्टार्टेड इटिंग द पोरीज नहीं से सिबे आगे सॉक होगी सी पोरीज खाइबा को जाऊ खाइबा को आरंभ करदेला दि ओल्ड वुमेन सेड नहीं नो सॉक्ड बाय द वे सिबे स्टार्टेड इटिंग द पोरीज खाइला तो स्टार्टेड आरंभ कला स्टार्टेड दिस इज ए वर्ब आरंभ कला इटिंग खाइबा द पोरीज द ओल्ड वुमेन सेड कहला सन पुअरे यू आर ट्राइंग टू ईट दि हॉट पोरीज तू तातिला जाऊ खाइबा चेष्टा करछु ट्राइंग मीन्स चेष्टा करछु टू ईट खाइबा को दि हॉट पोरीज दि वे आवर सिबेई सामंतरा इज लेइंग दि फाउंडेशन भित्ति प्रस्तर आप कोणार्क टेम्पल से बुढ़ी ताकू आगा कहूँ बुढ़ी जानी जे दैट मैन हिमसेल्फ वाज सिबेई सामंतराय एणु ताकू कहला बापरे आमर सिबेई सामंतरा कोणार्क मंदिर
ତୋଳିବା जो भित्ति प्रस्तर स्थापन कला पत्थर जमी पकाउनि कि मझे तू सेमती जाऊ मझी आड़े खाऊ कि व्हाट इज दिस इज इट राइट प्रोसीजर टू ईट परीज नो इट इज नॉट राइट प्रोसीजर नॉट स्ट्रेट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द प्लेट सीधा फ्रॉम द साइड ईट स्लोली धीरे धीरे ये बुढ़ीरा जानी ये सिबे ही सामने जानी कि जा कहला से परा जानिनी। जानी से जा जो कहूँ परा दैट इज व्हाई सी इज सेइंग लाइक दिस आम शिवेई मान जिंद करते तू सिंद कर सी जो जानता शिवेई मान कही नते है रे से पत्थर पकाउछ जिन फाउंडेशन में पत्थर पकाउछ जिन जाऊ से खाऊ कि इनी कही था बट सी न जानला वाला कही बट सी इज ए गॉडेस सी न्यू एवरीथिंग सब जानी बट एक्टिंग लाइक एज इफ सी डिड नॉट नो एनीथिंग सब जानी कि एक्टिंग करछे से जानती है दैट ओल्ड लेडी इज नॉन एल्स देन गॉडेस सी जने बुढ़ी ठाकुराणीटा से बुढ़ी ऊपर आसिक बसी ताकू बुद्धि शिखेबले टू टीच हिम ए गुड लेसन आउ से बुढ़ीटा मु भावुची काकड़पुर मंगला माँ मंगला मंदिर आसला पर से सब घटना घटी ना आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर टू मदर मंगला गणेश मंगला शिवेई माना वेंट टू द हट सो ईट स्लोली धीरे धीरे खा फ्रॉम द साइड गोटे तड़ू धीरे धीरे खा हु साइड होम द ओल्ड वुमेन साइड टू शिवेई नॉट स्ट्रेट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द प्लेट सीधा मझिरू खा ना लुक हाउ आवर वाइज मिनिस्टर इज द थ्रोइंग स्टोन्स इन ए हरी इन टू द डीप सी आमर देखे इन आमर ये जो हरिड़ भारी व्यस्त व्यस्त व्हाट मिनिस्टर मंत्री पत्थर सब कौन कर समुद्र मध्य फिंगी दौरान नॉट लेइंग दी फाउंडेशन भित्ति प्रस्तर स्लोली फ्रॉम दी साइड तड़ू आरंभ करना पत्थर नहीं मझे फिंगिले हम कि गोटे तड़ा आड़ पत्थर पकई पकई चल सो दैट यू कैन मेक ए प्लाटफॉर्म पिठटा तैयारी कर पारियो अदरवाइज यू कांट हु सेड ऑल दीज थिंग्स द ओल्ड वुमेन टू होम पकोजे सब पड़ौथियो पढ़ो तो शिवेई मान तो दी वाइज टिप्स ये जो उपदेश सूचना तो दी वाइज चतुर सूचना फ्रॉम दी पूर इलिटरेट मैंने अशिक्षित निरक्षर मैंने जाको अयु लिखार भी आसनी द वाइज टिप्स फ्रॉम दी पूर इलिटरेट ओल्ड वुमेन वेर मोर देन इनफ जथेष्ट इनफ मीन्स जथेष्ट फॉर दी वाइज मिनिस्टर जथेष्ट थिला एतिक ये हरिड़ बेग तरबर हो फेरीगले होम घर गले एने लेडी दी फाउंडेशन भित्ति प्रस्तर स्थापन कले आम घर तैयारी कले पुनादी पकाउने फाउंडेशन मीन्स पुनादी पूजा करुचे पत्तटी पोतुचे करचे कि नहीं डोंट वी डू इट फाउंडेशन एज पर दी टिप्स तार सूचना अनुसार ये काम आरंभ करदेला दी वर्क वाज डन होगा जस्ट इन 6 days 6 दिन भितर दी वर्क वाज डन कमिटी सर which he could not do for the last 6 months गत 6 मास जो कमटा से कर पाला इट वाज डन विथ इन 6 days 6 दिन भीतर होगा विथ द हेल्प ऑफ होम विथ द हेल्प ऑफ द वाइज काउंसिल और वाइज टिप्स ऑफ द वाइज ओल्ड लेडी तांकर परामर्श रे कामटा होगा प्रोबेबली मीन्स संभवतः पीपुल से लोक मैंने पीपुल मीन्स लोक मैंने से मीन्स कहते लोक कहते दि गॉडेस मंगला डिडंट आई टेल यू जस्ट लिटिल बिफोर माँ टीका पूर्व कही नी माँ मंगला आसते लिखी समस्ते बिलीव कर गॉडेस मंगला हु शिवेई वेंट टू प्रे दैट डे अपीयर्ड दृश्य हेले पास्ट टेंस अपीयर्ड टू हिम इन द गाइज छद्म बेश गाइज मीन्स छद्म बेश
of the poor old woman to give him the timely tips. ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ମା ମଙ୍ଗଳା, people believe it, people say it. Could understand? This is divine blessing. This is called divine blessing. So next question is that is a comprehension questions. What did I say? Comprehension questions. Comprehension questions. What was the old woman doing? Tell me. The old woman was preparing a food. The old woman was preparing a food. What did she give Sibai to eat? She gave Sibai hot simple rice produce to eat. That means she gave hot produce to Sibai. She gave hot produce. 1 minute. Hot porridge. Hot porridge. Here, जाओ. Next one is that is which? 1 minute. How did Sibai start to eat the porridge? Porridge जाऊ खाइबाटा केमिति आरंभ कला? Sibai started to eat porridge by taking a handful of it from the middle of the plate. Could understand? Sibai dived his hand straight in the middle of the porridge and started eating. Sibai dived his hand straight in the middle of the hot porridge, right? Dived his hand straight, I get straight in the middle of the porridge and started eating. Next one is what did the old woman say? The old woman addressing him as a son told him that he was trying to eat the hot porridge in the way Sibai Samantarai was laying the foundation of the Konark temple. 5. Did she know that the man was Sibai himself? No. She didn't know that the man was Sibai himself. 6. What was her advice to Sibai on eating the porridge? So, her advice was that he should eat the porridge slowly from the side, not straight from the middle of the plate. Question number 7. How was her advice similar to that of laying the foundation? Foundation में भित्ति प्रस्तर कही I told you पुनादि of the Konark temple. Her advice had similar importance for the laying of the foundation of the Konark temple. Sibai, to be successfully in his work, should start dumping stones on the side of the sea and not on the middle of the sea. Question number 8. Did Sibai follow the advice of the old woman? Yes, Sibai followed the advice of the old woman. 9. Did the advice work? Yes, the advice worked. Who think the old man was no other than the goddess Mangala? People think that the woman was no other than the goddess Mangala.
Why did the goddess come in disguise? In guise शब्द में सर आप an old woman. The goddess came in the guise of an old woman to give him the timely tips on the work of the laying the foundation of the Konark temple. Do you like this story? Yes, I like this story. Okay. Next. Hard you know. Head you. That is not a hard, it is a head. Head. Had you known the story about our state earlier? Yes, I had known the story of our state earlier or before. Next one is what is there in store for us to discuss. Post reading activities. Yes. Next one is your teacher listening. Your teacher will read aloud some of the words listed below. Tick the words she reads aloud. So, glory. What did I say? Glory. Glory. Yes, this is the glory. GLORY. Gaurava. Next one is dump. Yes, dump. Jama kariba. Trouble. Asuvita. Habitation. Basati. Goddess. Devi. Hungry. Bhokila. Legend. Kimbadanti. Foundation. କ'ଣ କହିଥିଲି ପୁନାଦି ୱେଲକମ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଇଲିଟରେଟ୍ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର so these are the words. Next one is your teacher will read aloud the first 3 sentences of the story. Listen to him, her and fill in the gaps. Okay, we shall do it. We shall do it. The Konark, you know, temple, TMPLE temple, Mandira. The Konark temple is the glory, GLORY, glory meaning Gaurav, of Orissa. It is also the glory of what? India. Many legends, LEGENDS, legend किंबदंती are associated, जोड़ी ହେଇକି ରହିଛି associated with it, WITH, with ସହିତ it, to most, most, to most important being, 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 dharma, about dharma and Sibei Samantarai. Next one is dialogue. Rehearsal. Teacher versus student, student versus students. Sibei, can I get some food to eat? मते खाइयो किछु मिलियो कि? Old woman, here is some porridge for you. तो फिर जाओ अछि खा. Sibei, it is very hot. बहुत तातुची. Could understand? Hot. Next, vocabulary. Spelling, look, cover, write, verify and correct the words from to a learning phrases. Look at the following phrases vakyansa and see how these are used. केमिति व्यवहृत होइछि देखो. In the story, paragraph number is provided against each within brackets. Bracket दिया जाइछे. Try to get the meaning and use of phrases for the context. In charge of paragraph 2. In deep trouble, paragraph 2. With the hope of, paragraph 2. More than enough, paragraph 4. Age for, paragraph 4. In the guise of, paragraph 4. According to, paragraph 2. In a troubled state of mind, paragraph 2. Now read the para and fill in the gaps with the right phrases from above. There are two main legends about the Konark temple. Konark temple. Could understand?
There are two main legends about the Konark temple according to one. This is according to one. Anusare. According means anusare. To one. According to one legend, Sibei Samantara was the minister of the king Langula Narasingha Dev. He was in charge of Daitvare. In charge of Daitvare. In charge of what? In charge of laying the foundation of the Konark temple. Whatever stones were thrown to the sea, all were washed away by the sea. The minister all were washed away by the sea. The minister was in deep trouble. Could understand? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବଡ଼ ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଇନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାବଲ୍, ଇନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାବଲ୍. In this troubled state of mind, this is troubled, this is you. TROUBLED, troubled state of mind, mind. He went to visit Ma Mangala with the hope of Mangala, with the hope, asare, hope of getting her blessing, Asirvada. Blessing means Asirvada. On the way, Ma Mangala met him in the guise of guise, GUISE, guise of an old woman. She gave her advice. She worked as per the advice of Ma Mangala. Advice of Ma Mangala. She worked. No. In the guise of Mangala met him. Wait. In the guise of. She gave her advice. She worked as per foundation of the temple. In the fact, the advice Ma Mangala gave was more than enough. जरूरत से ज़्यादा. More than enough for Sibi. Usage, narration, from the direct to indirect speech, see the example and do the task. Okay, direct speech. I करथिले. Sibi said, give me some food. Old woman, take the porridge from the side. 2. Old woman, do not take the porridge from the middle. That's not 2. Old woman, put the stones on the side. Old woman, do not throw the stones in the middle. So, wait. Let's see what is it. Number 1. The old woman said, invited come out, jo. The old woman asked, right? The old woman asked him to take the porridge, from sides. Number 2, the old woman asked not to take. Do not take the porridge. Take the porridge. Okay.
Take the porridge from the middle. 3. Now the old woman asked her to put the stones. To put the stones on the sides. The old woman asked her not to throw stones, not to throw. Next question. That is, write answer the following questions in the complete sentence. Okay, we shall do it. What is the para about? What is the para 1 about? The para is about the para 1 is about the Konark temple and legends associated with its starting and finishing. Okay, आरंभ एवं शेष विषय लिखा जाइए किंवदंती कथा लिखाई. Okay, what was the name of the king? The name of the king was Langula Narasingha Deva. Okay, why did Sibei Samantara go to the old woman's hut? Sibei Samantara went to old woman's hut with the hope of getting some food to satisfy his hunger. Next one is, what did she give Sibei Samantarai to eat? She gave Sibei Samantara hot simple rice porridge to eat. Hot simple, okay, rice porridge. Had you known this story of your state before? Yes, I had known this story of our state before. Okay. Next one is, let's see what is there. Yes. See activity 1, class 2. You have matched items under A with items under B. Now write 3 sentences following the example given. Example, Langula Narasingha Deva. Yes. Now this is the king. Langula Narasingha Deva was the king. 3. Sibei Samantarai was the minister of the king. Okay. 2. The old woman gave advice which helped Sibei lay the foundation of the Konark temple. 3. Dharma laid the stone at the top of the Konark temple. Laid the crown at the top of the Konark temple. Next one is, what is that? Yes. Read the following para about Ma Mangala of Kakatpur and then write a para about Ma Tarini of Ghotoga, changing the underlying words using the helps given below. Kakatpur is a small town. It is in the district of Puri. It is about 70 kilometers away from Bhubaneswar. It is famous for goddess Ma Mangala temple. It is one of the 7 famous goddess temples of Orissa. Many people from different places visit this temple every day. People believe that Ma Mangala fulfills their wishes. Helps. Ghotogan, small town, famous for Ma Tarini temple. Ma Tarini temple, not a Tarini. Tarini temple. District Keonjhar, distance about 170 kilometers from Bhubaneswar. Okay. Next one is, so Ghotogaon is a small town. It is in the district of Keonjhar. It is about 170 kilometers away from Bhubaneswar. It is famous for goddess Ma Tarini temple. It is one of the 7 famous goddess temples of Orissa. Many people from different places visit this temple every day. People believe that Ma Tarini fulfills their wishes. Here D, you are
very much fond of listening to stories, aren't you? Don't you also enjoy reading stories? Here are some details on a very good story book that you won't miss to read. Okay, next one is see. Here is a post Lafaba. That is a Lafaba. So you are very much fond of listening, so leave it. So Indian Post MO. This is MO, money order form. So what is written? Space for communication. This is space for communication. जोगाजोग करिया पे भाव विनिमय करिया पे लिखी. So dear ये लिखा हुआ dear सार्स कौन लिखा है जो please send me. तो उर्मिला बलराम साहू legends and folk tales from and around Asia by post at the address given here. Okay, बलराम दास रामायण सेंड कराई. तो ये पोस्टमैन टू डिटाच ये पोस्टमैन टू डिचार्ज ये कौन कर काटिकी देदेव. पोस्टमैन लफाफाट काट एमओ काटिकी देदेव. एवं देदेजी एमओ एट देची इंडियन पोस्ट मनी ऑर्डर देला. यहाँ एमओ मीन्स मनी ऑर्डर, इंडियन पोस्ट मनी ऑर्डर. तापर नेक्स्ट देला कोड नंबर इन केस ऑफ सैटेलाइट एमओ. नेक्स्ट एमओ 25 पैसा. दिस इज पैसा. तापर नेक्स्ट वन इज पे आर रुपीस 175 रुपीस 175 ओनली लिखा हे. यहाँ अंकर लिख अंकर लिखिदेला 175. यहाँ इन वार्ड्स लिख 100 रुपीस 175 ओनली 175 एटा 5. ओके, नेक्स्ट टू मेसेज हिज ब्रदर सेड दिस कंपनी दी सप्लायर्स नहीं रहिबो जो सप्लायर टू तमे मगेब नहीं. तो तार पिन कोड दिस इज पिन कोड आमर इंडिया आमर गाँव पिन कोड हूँ 761114. कि आम वी विल नॉट गिव इट. आम आर देनी आम जहाँ को मगुचे ता पिन नंबरटा लिखा. तो सेंडर्स सिग्नेचर ये जी पठाऊे ये किए बलराम कर बलराम साहू सिग्नेचर करदे. बलराम सिग्नेचर करदेला. नेक्स्ट एमओ नंबर डेटेड. दिस इज एमओ नंबर डेटेड. ओके, ये रुपीस लिखाई. नेक्स्ट कंबाइंड अबलंग स्टाम्प. ये अबलंग स्टाम्प यहाँ को अबलंग स्टाम्प कहते. स्टाम्प दिहब ये रुपीस लिखाई सिग्नेचर. तापर ये जो लास्ट को आसला सब अच्छी देख तुम्हें पढ़ी पढ़ी जीव. ये लास्ट वन को पलि आसिले तुम ये देला सेंडर्स एड्रेस. ये सेंडर्स एड्रेस देती ये दब कौन तुम्हें जी पठाऊ. धन्य बलराम साहू एटेड पोस्ट मंडमराई डेरा साई. तुम पिन कोडटा देदेव से पिन कोड दब तुम ये दब. ये तुम्हें मनी ऑर्डर फॉर्म इंडियन पोस्टल मनी ऑर्डर फॉर्म फिलअप कर. नेक्स्ट वार्ड नोट. वार्ड नोट रे कौन आसी जाइए देखा. कट होल्ड आप धरी पकेबा धरने. डेजर्ट माने ड्राई सैंड कवर्ड एरिया मरुभूमि. ड्रैगड माने घोषार गोटे टाणी नेबा. फ्लिकरिंग मिंजी मिंजी जलिबा. दैट कैरिड हिम बाय फोर्स टाणी नेबा घोषारी नेबा. फ्लिकरिंग बर्न और साइन अनस्टेडिली दिकी दिकी जलुवा. ग्लोरी फेम एंड ऑनर गौरव जस हरिड वीक रिटर्नड क्विकली शीघ्र चलीजे फेरी जावा. इलिटरेट वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. जी जहाँ लिखार पढ़ियार आउनी लिखि पढ़ी जान व्यक्ति निरक्षर. लेड इज दि फाउंडेशन स्टोन भर मेड दि फाउंडेशन मूलदुआ स्थापन करले. लेम एडजेक्टिव अनेबल टू वर्क नॉर्मली बिकॉज ऑफ इंजुरी और डिफेक्ट इन लेग छोटा. नेक्स्ट लेजेंड स्टोरी फ्रॉम दि पास्ट किंवदंती पुराणा कथा. मर्चेंट नाउन बिजनेसमैन व्यवसायी. पोरिज नाउन ए टाइप ऑफ सेमी लिक्विड फूड मेड फ्रॉम राइस एंड व्हाट मिल्क खीरी जाऊ इत्यादि. नेक्स्ट वन इज खीरी मध्य कहीपर
Tatted means chira lenkada, chira chinda. Okay. Next one is no. That's the end of today's lesson. We shall discuss the other lessons till then in your next period. Till then, bye. Thank you. Yes, okay. It's okay. So this is the Konark temple. We were discussing about. Okay. Bye. Thank you.